in the mind, faith in the words, pride in our souls, let's salute the nation on this auspicious day. Good morning, respected Principal Sir, our Chief Guest, our COVID warrior, Lohal Sir, teachers, parents, and dear students. I, Neha Vashish, on behalf of Podar International School, Wakar, welcome you all to today's program and wish you all a very happy 75th Independence Day. India achieved independence from the British rule on 15th August 1947. This year marks the 75th anniversary of the culmination of our freedom struggle. It gives me immense pleasure to welcome our chief guest, our COVID warrior, Mr. Anil Lohar, sir. Sir is Assistant Police Inspector, Wakar Police Station. Sir is a graduate from Jalgaon. Sir passed MPSC in 2010. Welcome, sir. May I now request Principal Sir to felicitate Lohal Sir with a bouquet. We also have amongst us Sagar Kotwal Sir. Let us put our hands together to welcome Sagar Kotwal Sir. Thank you, sir. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है. Let's feel proud to be a part of a glorious nation and hoist the tricolor high. May I request Principal Sir and our esteemed chief guests to please hoist the national flag. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा
now like to request our Honorable Principal Sir to please address the gathering. A very good morning to one and all. A hearty welcome to our Honorable Chief Guest of today, Lohar Sir, his assistant, Coach Sir, all the teachers, parents, and dear children. It is unfortunate that we are attending the Independence Day from home, but all the same, because of the present situation, there is no other way out for us. We are commemorating the Independence Day, the 75th Independence Day of our country. There's a long struggle that has taken before we could get the independence. And as you know, the great stalwarts, the freedom fighters, Mahatma Gandhi ji, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Khan Ghaffar Khan, Lokmanya Tilak, he would say, Swaraj is my birthright and I shall have it. So this movement had to take place to awaken the society and stand in one spirit against the Britishers, and only when they realized that it is going to be very difficult to control the Indians under the leadership of Mahatma Gandhi ji, they tried their level best to control it and had to even implement a dangerous, horrific act like Jallianwala Bagh, where hundreds and hundreds of our people were massacred. But then non-violence, non-cooperation movement, Quit India movement created an unrest throughout the India, and finally Queen had to assent to the request of Indians to liberate our India. And that's how today we are grateful to all our freedom fighters who have given us this freedom. We have come a long way after that. And since then, at the time of independence, we were absolutely crippled, absolutely broken. We had no infrastructure available with us, no economics, no facilities. Education was not so proper. Health areas was very poor. People were illiterate, poverty, destitution everywhere. And then our forefathers had to lay down their foundation so that we can be on a proper track. So today we salute all our freedom fighters. We also salute all the martyrs who laid down their lives for our freedom. But now the question is, all those people who have laid down their lives and contributed to the growth of our nation, there are lot many people who have contributed, like J.R.D. Tata, Homi Bhabha, Dhirubhai Ambani, and Birlas, and so many people who have laid down the industrial revolution in India. At the same time, scientific growth is a wonderful thing that has happened for our nation. We have made our impact in the space technology. Our former President of India, APJ Abdul Kalam sir, was a pioneer in this industry of space technology. He was given the responsibility to lead our team of scientists so that we can be standing on our own feet. And today, as children of a free India, it is our duty to ensure or try to think in what way I can contribute to the nation. Let us not try to find out
or ask what the nation is trying to give it to us, but what I can give to the nation. So therefore, children, let us not try to criticize any government, whether it was the past government or the present government, whether this society or that society. Let us come together, be united, because this freedom has come at the cost. And let us think how we can contribute to the growth of the nation, growth of our society, growth of our community. Because Indians all over the world are known for the highly intellect community. We have made tremendous impact even in space. NASA, our scientists are making the efforts. Kalpana Chawla, who was a scientist from India, who has laid down her life for the sake of progress of the nation, this whole universe. So similarly, we need to think about educating ourselves in a proper way, try to see how we can explore our potential and talents, how we can be better human beings, and then try to contribute for the growth of our family, ourselves, and the nation. And when we are trying to flourish ourselves, we are sure that the name of Indians will be flying high. So let us pay the homage to all the freedom fighters who have laid down their lives today, and at the same time, to protect this freedom. Let us not get carried away like how the olden society or the kings who were trying to, for the pleasing the foreigners, laid down slowly the control of our nation into their hands. So let us see whether we can control our things within our hand and progress for ourselves and protect all the freedom that we have got. We need to have the tolerance and respect for our different religions that we have, different languages that we have, different cultures that we have, because India is known for the society with diversity, and we need to have the respect for this diversity. Only then we will be able to progress. I wish you all the best, wish you a very happy Independence Day, and congratulate all the people who have contributed for this. Thank you. Have a wonderful day. We would indeed like to move forward with your inspiring words. Now, may I request our chief guest, Mr. Anil Lohal sir, to please say a few words. आज आपण सगळे लोक या ठिकाणी स्वातंत्र्य दिवसाच्या निमित्ताने जमलेलो आहोत. आज सरांनी सांगितल्याप्रमाणे स्वातंत्र्याकरिता खूप लोकांनी जीवाचे बलिदान दिलेले आहेत. स्वातंत्र्य एका कॉस्टने मिळालेलं आहे हे आपल्याला सरांनी सांगितलंय. ते बरोबरच आहे. तर ती जी कॉस्ट आहे, ज्या काही लोकांनी आपले जीव दिले आहेत, काही लोकांनी आपले सर्वस्व अर्पण करून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आपण फार भाग्यवान आहोत की आपण स्वातंत्र्यात जन्मलो आहोत. त्यामुळे ह्या स्वातंत्र्याला आपण जे उपभोगतो आहे तर त्याचं काही कर्तव्य आपले आहेत, तर त्या कर्तव्याचं भान ठेवण्याबाबत सरांनी आपल्याला कळवलंच आहे. त्या पद्धतीने आपण सगळ्यांनी आपल्या सामाजिक बांधिलकी आणि याचं भान ठेवलं तर निश्चितच आपण आपल्या देशाला एका उंच स्थानापर्यंत नेऊ शकू असं मला वाटतं. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना मी या माध्यमातून हेच सांगू इच्छितो की देशाचं भविष्य, उद्याचं भविष्य म्हणजे विद्यार्थी आहेत. ते जसे घडणार तसं आपला देश घडणार आहे उद्या. आणि निश्चितच अशा ज्या शाळा आहेत, एवढं चांगल्या प्रकारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत, अशा शाळांमुळे निश्चितच चांगले विद्यार्थी घडून आपला देश चांगला घडण्यास मदत होईल अशी मी आशा बाळगतो. आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने शाळेने आणि प्रिन्सिपल सरांनी मला इन्व्हाइट केलं आणि हा सन्मान दिला, त्याबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. 2 शब्द सांगतो. Thank you so much, sir. Now, may I request everyone to please stand up for the Poddar song. We are the kings and queens. We are the shiny dreams. We are the kings and queens.
the shining dream. We nurture sunshine, embrace the wind. We have the scientific zeal and power to enthrall. We want the whole horizon. We want the whole horizon. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. है संस्कृति हमारी, हर मुश्किल हमसे हारी। हम आसमां को छूने की रखते हैं तैयारी। Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. बापू ने देखा सपना, हमने उसको साकारा। विश्वास सत्य निष्ठा से चमके बन के ध्रुव तारा। We are Boda. Yes, we are Boda. Excellence is the key. We make our own destiny. Smiling faces, passionate souls. That's what we are. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Yes, we are Boda. Music is a divine art form that allows beautiful expression of feelings. Today, we will witness an Indian classical music, Bandish in Rag Ahit Bhairav by Aman Sinha of grade 5th B.
performance Aman. Thank you. Today, our heart is full of patriotism, and to express these feelings, we have Trisha Paul of grade 5th B. Trisha अपने सपनों के भारत के बारे में अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगी। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, निर्णायकगण, शिक्षकगण और यहाँ उपस्थित मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं त्रिशा राहुल कक्षा 5वीं की छात्रा आपके सामने मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने कुछ विचार प्रकट करने जा रही हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश हो मेरा। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है। सबसे पहले मैं हमारे देश भारत को कोरोना मुक्त देखना चाहती हूँ। सरकार शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। मेरा सपना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार समान रूप से मिले। मैं चाहती हूँ कि यहाँ के वैज्ञानिक एवं नौजवानों को दूसरे देशों में जाने की आवश्यकता ना पड़े, बल्कि वे भारत में ही रहकर अपने द्वारा किए गए खोज और अनुसंधान से संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर सके। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जो सभी के लिए बराबर रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जिससे आम दिन होने वाले अपराध कम हो और देश की आर्थिक असमानता और गरीबी हट जाए। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा स्थान होगा जहाँ लोगों का जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और जहाँ महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और महत्व दिया जाएगा। साथ ही जहाँ महिलाओं की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। भारत माता करे पुकार, देश का करो सुधार। मैं अपने देश को अखंड भारत के रूप में देखना चाहती हूँ, जो भ्रष्टाचार, भेदभाव, अंधविश्वास, बुराइयों, बाल मजदूरी और आतंकवाद से मुक्त हो। ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे यारो, संभालो इसे। आओ हम सब प्रतिज्ञा करते हैं और आशा रखते हैं कि हमारा यह सपना जल्द ही पूरा होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। We owe a lot to our freedom fighters who gave their life and made great sacrifices to help us gain independence. That is why we are here together to celebrate this nation's day. This day is dedicated to these nation's guardians. Coming next are the performances by our dear students of grade 1 and 2 dressed up as freedom fighters. Happy Independence Day to respected teachers and my dear friends. My name is Arya Rakesh Sarode and I am playing role of Savitribai Phule. If we educate girl, we educate family and whole nation. Save girls, educate girls. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Hello friends and teacher. Who am I? I am freedom fighter Bhagat Singh. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। Hello friends, my name is Ekansh Verma from first A. मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ। लोग मुझे पंडित कहते हैं। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे।
देश पे जिसका खून न खोले खून नहीं वो पानी है। देश के जो काम न आए वो बेकार जवानी है। जय हिंद। My name is Mohandas Karamchand Gandhi. People call me Bapu. Because I believe in non-violence, truth and peace. Dandi, dandi, dandi. Dandi chalo. करेंगे हम मरेंगे. My name is Soumya Mangal Hoche. Today I am going to talk about Rani Lakshmibai. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. Thank you. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. नमस्कार, मी मोहनदास करमचंद गांधी. तीन नेम तुम्ही पाळताय ना, ते आहेत वाईट बघू नका, वाईट बोलू नका, वाईट ऐकू नका. धन्यवाद. ईशानी डोमाने. आई एम डूइंग झांसी की रानी. मैं हूँ झांसी की रानी. मेरा नाम है लक्ष्मीबाई. ये धरती मेरी माँ है. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का हर सपना पूरा करूंगी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग. मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी. मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी. Thank you. My name is Navya Stigar. I am 6 years old. I am studying in first standard. I am going to tell about Rani Lakshmibai. मैं रानी लक्ष्मीबाई इस धरती माँ की बेटी हूँ. मेरे होते हुए कोई फिरंगी इस धरती माँ पे हाथ नहीं लगा सकता. हर हर महादेव, हर हर महादेव. Thank you. Hello everyone, my name is Nityan Naseri and today I have become Sarojini Naidu. And one of my favorite slogans is, as long as I have life, as long as blood flows through this arm of mine, I shall not leave the cause of freedom. Jai Hind. Everyone, myself is Pranav Kund. I study in standard 1B. Today I am going to speak about Jawaharlal Nehru. Jai Hind. Good morning everyone. My name is Vishnu Prati. I am studying in 4th B. Today I am Sardar Vallabhbhai Patel, also known as Iron Man of India. Unity is a strength. Unity is a strength. Vande Mataram. Jai Hind. Everyone, my name is Vibhan Soni. अंग्रेजों भारत छोड़ो. क्या प्रेम है वह जीवन है. वक्ता का कोई दर्द नहीं होता. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Respected ma'am and my dear friends, my name is Savi Chaudhary. I read in first C Bodar International School, Bakar. Today, fancy dress competition and dress up like Bhagat Singh. Bhagat Singh was freedom fighter of India. He belonged to Sikh family. He born on September 1907. He died for the nation. चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने
freedom. Give this assurance to Indians. You are the world's greatest leader, Subhash Chandra Bose. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी की जीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा. थैंक यू. मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद हूँ. जब तक मैं शरीर में प्राण है, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूँगा. जय हिंद. दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे. आजाद है और आजाद रहेंगे. जय हिंद. Hello everybody, myself Vivan Chandra. Today I am going to play a role of brave freedom fighter Bhagat Singh. बम! हमने ये धमाका किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सबको अपनी बात सुनाने के लिए किया है. महलों को सुनाने के लिए धमाके की ही जरूरत होती है. और वो आ गया है. अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ेगा. अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. वंदे मातरम, वंदे मातरम. Britishers can hang me, but I don't have any regret. They can kill me, but they cannot kill my ideas. They can crush my body, but they cannot crush my spirit. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है कि जो कितना बाज़ का दिल में है. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद. वंदे मातरम, वंदे मातरम. जय हिंद. थैंक यू. My name is Anshika Yatishode. I am studying first standard. I am playing role of Savitribai Jyotiba Phule. I was born on 3rd January 1831 in Nagaon village. I became India's first female teacher. We educate girl, we educate family, we educate whole nation. Jai Hind, Jai Bharat. Hello everyone, happy Independence Day, and my name is Sanskar Pathak. Today I am going to sing a song. Watan, let's start. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ याद रहे तू. वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से. पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू. वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू. वतन मेरे वतन. Hello my dear friends and teachers. Today I am Jhansi Ki Rani. Once there was a queen in India whose name was Jhansi Ki Rani. Jai Shankar, Jai Shankar. Thank you. Hello everyone. I am Swara from grade 2nd A. Today I have dressed up as Ram Prasad Bismil. Ram Prasad Bismil was a great freedom fighter of India. He was born on 11 June 1897. He was a patriotic poet. He wrote poems in Hindi and Urdu. But here I am taking the opportunity to offer a
by presenting a poem written by him. The title of the poem is सरफरोशी की तमन्ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ए शहीद मुल्क मिल्लत है, मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का जमघट आज ऊंचे का दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। जय हिंद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आजाद, चंद्रशेखर आजाद। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे हम, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे हम, आजाद आजाद ही रहेंगे हम। जिंदगी की आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते रहेंगे हम, आजाद आजाद ही रहेंगे हम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Thank you. I am Subhash Chandra Bose. I was born on 23rd January 1897 in Cuttack, Odisha. I am known as Netaji. I am a freedom fighter. I have started the newspaper Swaraj and Azad Hind Fauj. My slogan is तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, my name is Himangi Ataf. I study in second grade in Pottar International. दोस्तों, आप सब तो मुझे पहचाने गए होंगे, भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। You can kill my body, but you can't kill my ideas. You can thresh my body, but you can't thresh my soul. जय हिंद। माता भारत माता की जय। फरों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। जय हिंद मातरम। Thank you everyone. My name is Sarwan Rahul Kulkarni from 2nd B. My school name is Pottar International School. Today I will be become great freedom fighter लोकमान्य टिळक. नमस्कार प्रियजनांनो, माझे नाव बाळ गंगाधर टिळक, तसेच जनतेने मला लोकमान्य पदवी दिल्याने लोकमान्य टिळक असे म्हणतात. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. आता खूप झाली ब्रिटिशांची गुलामगिरी, आता बंद करायची हुकुमशाही. नमस्कार, मेरा नाम है विवान बाबर। हम सबको मिलकर बुराई से लड़ना है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Akshay Sethi. Today I am going to act like Bhagat Singh. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे ए आसमां, हाँ अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जिंदगी तो अपने दम पे ही जी जाती है, दूसरे के दम पे तो सिर्फ जनाजा उठता है। जी हाँ, मैं भगत सिंह एक आजाद ख्यालों वाला क्रांतिकारी हूँ। मुझे तो बस अंग्रेजों से आजादी ही चाहिए और आजादी का रास्ता आजाद ख्यालों से ही बनता है। संपूर्ण देश में तो हमारा हक है और अपना हक हम अंग्रेजों से लेकर रहेंगे। अगर हमारी नई पीढ़ी को आजाद भारत देश पे रहना है तो हमें अंग्रेजों की गुलामी छोड़नी होगी। हमारा मकसद है इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। थैंक यू।
झांसी की रानी हूँ, इस धरती माँ की बेटी हूँ। मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं झांसी नहीं दूंगी, इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है। इसके लिए अभी से मैं इसका ऐलान करती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon, all of you. My name is Gargi Dinesh Khotade. I study in 2nd D. Today I play the role of Savitribai Phule. I am Savitribai Phule. I become India's first female teacher. If we educate a girl, we educate a family and whole nation. Educate girl, save girl. Thank you. Good morning everyone. My name is Jayash Padalu. I study in 2nd D. My school's name is Poddar International School. Today I am going to talk about Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was born 23rd of July 1856 and was a remarkable freedom fighter of India. In a raging protest against British, he created a burning flame across the nation with the slogan Swarajya is my birthright. Thank you. My name is Krishika Nitin Jathar. Today I want to play a role of Sarojini Naidu, one of the greatest feminine freedom fighter and a famous poetess too. That I am not ready to die because it requires infinitely greater courage to live. Thank you. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind. Thank you, dear students, for the wonderful performances. 15th August 1947, a historic moment, our Independence Day. We all are grateful for our independence. Let me welcome Prithviraj Awal of grade 6th B to present his speech. Hi everyone, my name is Prithviraj Awal from class 6B of Poddar International School, Wakad, and today I am going to give an elocution on preparing India for future challenges. In this COVID situation, we spend all our days at our homes and every day becomes similar. However, the outside world is changing rapidly. One day everything will become again normal. But we have learned our lessons. We should be ready for the future challenges. The future challenges not only include another pandemic, but they are beyond that. The healthcare challenge in India is one of the growing challenge. We don't have enough medical staff, we don't have sufficient medical instruments, we don't have sufficient medicines, we don't have sufficient medical infrastructure in rural areas. To tackle all these problems, the government needs to restructure and reform the healthcare sector. Increasing budget to the healthcare sector, increasing research in the pharma sector, adopting new technologies and building more medical colleges are some of the measures to improve healthcare sector for a healthy India in the future. Recently we heard that India and China were in a conflict. Even though Indian army is the second largest army, there are huge challenges. Some of these challenges are lack of advanced weapons and new technologies and dependency on other countries. Some of the measures are allowing more budget to the military to upgrade its weapon system and develop R&D to reduce dependency on other countries. We should also encourage many people to join the army for a strong India for future. India is the second most populated country in the whole world. It will probably reach 1.5 billion people by 2030. It will really be challenging to manage food for everyone for every day. Today's agricultural policies are not enough to enhance agriculture.
The reduction in rate of farmers is alarming. Agriculture is dying as a desirable profession. So India seriously needs a revolution in the agricultural sector, like new rules, new policies, and fixed minimum prices for agricultural goods, and encouragement to take agriculture as a profession to tackle all the hunger challenges in the future. Besides this, India may face many challenges such as lack of infrastructure, pollution, corruption, lack of basic facilities, and lack of enhancement in science and technologies. To tackle all these problems, we need new rules, new policies, and more budget by the government. We should also improve our education system so the next generation not only gets advanced knowledge, but they also understand their duty towards their country. If we all start following all the rules, pay all the taxes, help keep our country clean and help each other, there will be no such challenge that we will not be able to tackle to make our country, our India, prosperous and strong in the future. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Prithviraj. It was indeed thought-provoking. Good morning everyone, my name is Neil Pathak from grade 3rd A and today I am going to sing the song Ae Watan. Ae Watan, Watan mere आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन. तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन. तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन, ऐ वतन ऐ वतन. And happy Independence Day everyone. Thank you. Have a nice day. Good morning, respected teacher and all my dear friends. My name is Ashish Pathak and today I am going to present Ya Vishwachi song from the movie Chintu 2. Ya Vishwachi आम्ही लेकरे, या विश्वाची आम्ही लेकरे, हे गगना आम्हाला नवे रंग दे, नवे शब्द दे अन नवे अर्थ दे, दे हृदयाला क्षितिजाची हाक, या विश्वाची आम्ही लेकरे, हे गगना आम्हाला नवे रंग दे, नवे शब्द दे अन नवे अर्थ दे, दे हृदयाला क्षितिजाची हाक, या विश्वाची आम्ही लेकरे, तुझ्या सारखे नेत्र सर्वत्र दे, नजरे तुनी एक नक्षत्र दे, तुझ्या सारखे नेत्र सर्वत्र
जळ दे, सृजनाचा स्वर दे, प्रेमाचा वर दे, शतकांचे घर दे, दे सकलांना सकलांचा ध्यास रे, या विश्वाची आम्ही लेकरे, नसावी मनाला निशेची भीती, नसावी श्रमांना उन्हाची क्षिती, नसावी मनाला निशेची भीती, नसावी श्रमांना उन्हाची क्षिती, तुझला स्मरू दे, अनभय विरू दे, आशा हसू दे, अन करुणा झरू दे, दे हृदयाशी स्वप्नांची पाखरे, या विश्वाची आम्ही लेकरे, हे गगना आम्हाला नवे रंग दे, नवे शब्द दे अन नवे अर्थ दे, दे हृदयाला क्षितिजाची हाकर, या विश्वाची आम्ही लेकरे. थँक यू. Good morning, ma'am, and my all dear friends. My name is Ashna Chilawat from 3rd A. Today I'm going to tell you about a poem. I salute my flag, it makes me proud. I am an Indian, say it loud. 3 pride colors adorn my flag. Saffron, white, green makes me glad. Ashok Chakra, blue and white, spin for progress, flying high. Jai Hind. Good morning everyone. My name is Yashmita from class 3rd B. Today I am going to recite a beautiful poem on my country India. This poem tells us that India is rich country which is famous for diversified culture, traditions, tongues, heritage, flora and fauna. Also, people of India belongs to different religions where all the Indians live together happily. So here's my poem, India is the best. So let's start it. Ours is the land of sages known as bravery ages. None can with its compete, its culture, none can beat. Whatever caste or religion, all live here in unison with rivers, sweet fountains. It's land of high mountains. Its green forests are pretty and are source of prosperity. Let's do hard work for its safety. Be on the guard. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. सुंदर प्यारा देश हमारा, बहे यहाँ गंगा की धारा, शीश हिमालय छूता, अंबर धोता है पग उसके सागर, है सबकी आंखों का तारा, इस पर अपने प्राण लुटाए, हम सब अपना मान बढ़ाए, भारत की जय, अपना नारा भारत की जय. जय हिंद. Good morning, friends and teachers. I'm Sia Hegde from 3rd grade B. Today I'm going to recite a poem of Independence Day. The poem's name is O Tricolor, You Are My Pride. O Tricolor, You Are My Pride, making me strong and happy inside. Beauty you have like a new bride. O Tricolor, You are my pride. You are inspiration, passion you provide, loved by lakhs, respected nationwide. You are splendid and popular worldwide. I salute my flag, it makes me proud. I am an Indian, it says out loud, it says out loud. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम है सरनेत सरकार. मैं कक्षा 3 पे पढ़ता हूँ. आज मैं एक कविता सुनाने आया हूँ. कविता का शीर्षक है झंडा. देखो बच्चों यह झंडा प्यारा, 3 रंगों का मेल सारा. रहे सदा यह झंडा ऊंचा, आकाश को रहे छूता. सदा करो तुम इसका मान, कभी न करना तुम इसका अपमान. झंडा ही है देश की शान, बना रहे सदा महान.
जय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम स्नेहा विशाल सोनी है। मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं गाने वाली हूँ नन्ना मुन्ना राही हूँ। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते में चलूंगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने भाई थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। My name is Rutvish Narendra Saivankar. I am singing a राष्ट्रदेवतांचे song. हे राष्ट्रदेवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आचंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। हे राष्ट्रदेवतांचे, हे राष्ट्र प्रेषितांचे, आचंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। कर्तव्य दाक्ष भूमी सीता रघुत माझी, रामायणे घडावे येथेच पराक्रमाचे। शिर उंच उंच व्हावे हिमवंत पर्वताचे, आचंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Now, let me welcome Akansha Kulkarni, who will be presenting a speech in Marathi. नमस्कार गुरुवर्य व माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, माझं नाव आकांक्षा कुलकर्णी, मी इयत्ता 5वीत शिकते। मी तुम्हा सगळ्यांना आज माझ्या स्वप्नातल्या भारताविषयी सांगणार आहे। स्वप्नातल्या भारताविषयी विचार करताना मला साने गुरुजी यांनी लिहिलेल्या कवितेतल्या काही ओळी आठवतात। बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो। आपला भारत देश त्याचा प्राचीन इतिहास आणि विविधतेतल्या एकतेसाठी ओळखला जातो। माझ्या स्वप्नातील भारत हा एक विकसित भारत आहे, जिथे जातीभेद भांडण तंटे नाही। माझ्या स्वप्नातील भारतातला प्रत्येक नागरिक साक्षर असेल व प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतील। शिक्षण पद्धती ही रोजगार देणारी असेल। माझ्या स्वप्नातील भारत हा भ्रष्टाचार मुक्त असेल, सुखी समृद्ध व आर्थिकदृष्ट्या प्रबळ असेल। स्त्री व पुरुषांना एक समान हक्क मिळतील व कोणतीही स्त्री निर्भयपणे समाजात वावरू शकेल। माझ्या स्वप्नातील भारत हा हरित क्रांतीने परिपूर्ण असेल। माझ्या स्वप्नातील भारत हा व्यसनमुक्त असेल व तिथे आरोग्यविषयक सेवा सुविधा उपलब्ध असतील। माझ्या स्वप्नातील भारतात माझ्या स्वप्नातील भारत वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रगतीसाठी ओळखला जाईल। माझ्या स्वप्नातील भारत हा खेळालाही तेवढंच महत्त्व देईल। आणि हो, माझ्या स्वप्नातला भारत हा करोना मुक्त, स्वच्छ व सुंदर असेल। कसं वाटतं बरं मित्रांनो अशा भारताची कल्पना करून? खूप छान की नाही? आपणही असा भारत घडवू शकतो जर का आपण एकजूट होऊन प्रयत्न केले तर चला आजच्या दिवशी आपण हा प्रण घेऊयात की आपण आपल्या भारताला ते मिळवून देऊच। तर चला, आणि मग आपण सगळे अभिमानाने म्हणू शकू, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है
है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Akansha. Now I would request Ritu ma'am to enlighten us with her speech. A very good morning to everyone gathered here today on this beautiful morning. Honorable Chief Guest Sir, respected Principal Sir, dear teachers and parents, and my dearest students. We have all gathered here today to celebrate our Independence Day. Many best wishes and congratulations to all of you on this auspicious occasion. India is celebrating its 75th Independence Day on August 15, 2021 across the country amid the coronavirus pandemic. Today we celebrate 75 years of independence and commemorate it as Azadi Ka Amrit Mahotsav. अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है. This dialogue from Rang De Basanti gives goosebumps to listeners, but it suits those fighters who sacrificed their lives for us. Exactly 74 years ago, that is 15th August 1947, our country got freedom from British rule. Freedom fighters like Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Rani Lakshmi Bai, Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, and the list goes on and on and on. The tradition of celebrating Independence Day is upheld in India so that the young generation is aware of the sacrifices once made to make this country a better place to live for them. Through these celebrations, we become aware of the developments that have taken place since India got independence. The youth plays a great role in nation building. It has the power to help a country develop and move towards progress. It also is responsible for bringing social reform within a country. It's you, dear children, who determine the future of the nation. We have many soldiers who leave their family to protect our nation and us. For sake of their country, they decide to join the army, whether it's armed forces, navy, BSF, commandos, or para-armed forces. Without informing their loved ones, they go to missions with no idea that whether they'll come back alive or wrapped in national flag. Freedom is the most loving aspect of this era. It is something which we pine for. On this auspicious day of independence, we all, the sons of Mother India, fight to win because we don't have runner-ups on the battlefield. Let's salute the martyrs who have let her flag flow high in the saffron and prosperous green hues. At last, I would like to end my speech with a note of gratefulness and a bunch of thank you. I pay tribute to all the noble personalities on this religious day, not forgetting the Khadi man of India who once brought in the Satyagraha, with some others who brought in the seraphic ideologies of Swaraj of the masses that led this day to be the most memorable one each year. Be their footprints keep on guiding us in creating an incredible and prosperous India ahead, and each day blooming in it to make a better place to live in. रूप हो और रंग हो, रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो. रूप हो और रंग हो, फूल सी कुछ गंध हो. हम जिए कुछ देश के हित, हम जिए कुछ देश के हित. प्राण में सौगंध हो, प्राण में सौगंध हो. जय हिंद. Thank you, ma'am. Coming next is a group performance by our students of grade 9. Hiteshri, Varuni, Jenny, Hinal, Khushi and Siddhi. Hello, my name is Siddhi Sabdi. Today I am going to make a craft on Independence Day. Such a high. You bring me comfort to my soul.
Professor Ashok Chakra in it. Now we will hang it to the wall. Hello all, I am Hiteshri Ami and today I am going to speak about one of the greatest freedom fighters of our motherland. Vinayak Damodar Savarkar, known as Veer Savarkar, was born on 28th May 1883 in Maharashtra. He was a born freedom fighter, writer, lawyer, politician, social reformer and supporter of Indian nationalism. He had freedom thoughts since his childhood. He gave the name to the uprising of 1857 as the first war of Indian independence in his book The History of War of the Indian Independence, which was originally written in Marathi. Abhinav Bharat Society was a secret society founded by Vinayak Damodar Savarkar and Ganesh Damodar Savarkar in 1904 to bring in national and revolutionary ideas. On October 7, 1905, Veer Savarkar burned foreign clothes and goods in Pune and propagated the idea of Swadeshi. In 1911, he was sentenced to Kala Pani, the cellular jail of Andaman and Nicobar, for 50 years. There, he was tortured like a criminal by Britishers and he was treated horribly. The food served was filled with dust and grass, while the water was unpurified rainwater. During his prison time, he wrote a book in which he talked about Hindutva, about its pride, and all people descended of Hindu culture as being part of Hindutva, including Jain, Buddhists, and Sikhs. Patitapavan Temple is the place from where Veer Savarkar started his struggle against inequality and injustice. It is the first temple in India open to Hindus of all castes. In 1964, Veer Savarkar declared his wish to attain Samadhi as his goal of independent India was achieved. On 1st February 1966, he started a hunger strike and passed away on 26 February 1966. Jai Hind, Vande Mataram. मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी जब तक की सांस रही वो जब तक की सांस रही वो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा हो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है भारत हमको जान से प्यारा है सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है
है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। Thank you. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश सजीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हम मिलजुल के बोले अब तो यारा, अपना जहाँ है सबसे प्यारा। Thank you dear friends for putting a brilliant performance. Gratitude is the mother of all virtues. I, Harshvardhan Sahasrabuddhe, the head boy of Poddar International School, Wakad, would like to extend a gratitude to everyone who made this program a grand success. First of all, on the behalf of Poddar International School, Wakad, I extend a hearty word of thanks to our chief guest, Mr. Ani Lohal, the Assistant Police Officer at Wakad Police Station, for sparing his precious time to grace the Independence Day program. I would like to thank our Honorable Principal Sir for his constant guidance and encouragement. My gratitude to all the speakers of today. I would also like to extend thanks to all the staff members for their untiring efforts. Our sincere gratitude goes to the parents for the support and presence. But last but not the least, a heartfelt thanks to our support staff for their invaluable contribution. Thank you. Jai Hind. वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। सुजला सुफला मलयज शीतला,
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्